हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में ये था कि आप घर में भी that he sallallahu alaihi wasallam used to actually do things actually in the house as well. Okay. If you are seeing the sitting room, वहाँ पर चीज़ें गंद पड़ा हुआ है, things are lying down, to put them in its places. ये तक़वा है. इसी तरह जो है, for example, so this is actually taqwa. So similarly, now the eating time comes. तो ईटिंग में तकवा ये है कि सुन्नत के मुताबिक खाना, टू गिव प्रेफरेंस टू अदर्स एज वेल एट द ईटिंग टाइम. आप अगर फ्रिज खोला है तो बीच में दूध की आधी बोतल है तो आप सारी आधी बोतल आप ही पी गए, तो ये तकवा नहीं है. आप ही अगर अब देखें और भी 5 बंदे रहते हैं तो देखें, सो व्हेन यू आर ईटिंग, व्हेन यू आर मेकिंग ब्रेकफास्ट और फूड, टू कीप अदर्स इन माइंड, टू गिव प्रेफरेंस टू अदर्स in those matters that we are sharing, that you are sharing. So some people will also come actually to think about others. So ye taqwa hai. That's what Allah subhanahu wa ta'ala wants us to do at that particular time. When you see something like this of food, to think about the others and actually to give a preference at the time of eating to others. So similarly, then you go outside. For example, people have some will walk. So taqwa ye hai that during walking, see if anything is harmful, any rubbish lying down, if you can you pick it up or put it at one side at least. Actually, ye taqwa hai. This is taqwa. Cleanliness. You have gone to throw rubbish into the rubbish dump, and you gone outside your backside of the house, and you see, obviously most of the time your neighbors will also have some rubbish to actually throw away, तो उनका भी साथ ले जाना, ये तकवा है. This is what taqwa entails. That is what the taqwa, or what ibadah, or what fasting, which you will be now, alhamdulillah, 15th Shaban ho, या रमज़ान हो, that is what it entails. That is what it wants to build in you. Then you're gone to your relationships come then. So taqwa is not to create difficulty for other relations, not to be argumentative, to finish and to end the argument, to give in some time whilst you are in truth. This is taqwa. To give in. कई दफ़ा बंदा सच्चा होता है लेकिन बहस मुबहस से, झगड़े से बचने के लिए खामोश हो जाना, ये तकवा होता है. दिस इज तकवा. अल्लाह सुब्हानहू व तआला said in the Quran about muttaqin, alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin al ghayz. गुस्सा पीने वाले हैं, ये तकवा है. गुस्सा आ जाए तो गुस्सा वो पी गए. वल आफीना अनिन नास, they have a forgiving nature. वो हर वक्त वो माफ़ी के मूड में है, वो माफ़ करना चाहते हैं. जैसे अल्लाह की ज़ात है, वो माफ़ी को पसंद करती है, तो अल्लाह के बंदे भी माफ़ी को पसंद करते हैं. Allah loves forgiving. Allah's servants, they also loves forgiving. So they are in the mode already ready to forgive if someone asks. Actually, they are not fond. Taqwa ये है कि they are not fond of praise. अपनी तारीफ चाहने वाले ये मुत्तकी नहीं होता. मुत्तकी है कि वो अपने क्रिटिसिज्म पसंद करता है. He likes criticism, constructive criticism. He likes his faults are outlined so that he can correct them. उसको अपने ऐब सुन के खुशी होती है, उसकी निशानी ये होती है, वो फौरन मान लेता है. वो कहता है बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मुझसे ये वाकई गलती हुई. So this shows the attitude of a muttaqi person, that he accepts his mistakes very easily. This means he wants to correct. He is a muttaqi. And those who justify, they are against the muttaqis. They are on the shaitanic path. शैतान made justification. मैंने इसलिए किया कि आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से हैं, मैं आग से हूँ. So you give justification of mistakes, then you are on the path of shaitan. Muttaqi means he easily forgives
and actually easily accepts excuse of other. He doesn't like empty praise. हमें जिस तरह पसंद है ना, खुशामंद साहब लोग हमारी तारीफ करें, झूठी भी कर रहे हैं बड़ा, एंड रिलीजियसली, सोशली, पॉलिटिकली, ये सारी डेंजरस है. इसलिए उनको कोई अगले दिन कह रहा था, पता नहीं कहा, ये जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना चमचे, तो चमचो बंदे को पसंद नहीं, यानी वो फ़ायदामंद नहीं होते. वो चमचा मीन्स स्पून. So it's a term used in Urdu that these people who just are yes men and who just praise to their leaders, whatever they say, yes, you are right, आप ही सही है, बिल्कुल ठीक है, सारा मामला ही सही. So they always actually tell until everything is destroyed. क्योंकि चमचा कहते चमचे को पसंद ना चमचा बनो, ना को चमचे को पसंद करो रखो. क्यों चमचे को उनको चमचा क्यों कहते हैं पता है आपको? शफीक ब्रदर पता है आपको? Why you don't know why चमचा जहां भी होता है वो खाली कर देता है उस चीज को. One quality of spoon is that wherever it is in a pot or it is in a cauldron, बड़ी देग में भी हो वो खाली कर देगा उसको. It is going empty. So this means that whoever have chamchas around him, spoon meaning these just people praising him, they are going to empty him sooner or later of goodness. इसलिए उनको चमचे कहते हैं कि वो खाली कर देते हैं हर चीज को. And you know very well, देखना हांडी में चमचा वही खाली करता है. It is used for actually. So these people also. So muttaqi person doesn't like chamcha, spoon, I mean just empty praises. He likes reality check. He likes criticism. Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu, he says that may Allah bless the person who brings gifts of my defects to me. अल्लाह उस शख्स को आबाद रखे जो मेरे ऐबों का तोहफा मुझसे लेके आता है. तो जैसे ये तबर्रकात हैं, इससे खुशी है. इसी तरह अपने ऐब ले जानने का भी वो खुशी, क्योंकि Prophet ﷺ said, whoever Allah wants goodness, if you want to see a lucky person, if you want to know you are lucky or not, one sign is to see, can you see your defects? If you can, you are one of those lucky people. The time you begin to see your wrongs, imagine you are on a way to success. And as soon as your eyes are closed from your, then it is very, very difficult. उसको समझ ही नहीं आएगी.